आपने कहा कि अभी बाजारों में अर्निंग्स की सीजन में उठापटक देखने को मिलेगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, और बाजार और अर्निंग से आपको कुछ उम्मीदें नहीं है, बिल्कुल वैसे ही स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स जो है मॉडरेट हो रही है, मॉडरेट से ज्यादा बहुत सारे डाउनग्रेड्स भी आ रहे हैं इस बार में। सो विनीत सर, व्हाट इज द आउटलुक लाइक? अर्निंग सीजन भी खत्म होने वाला है, बजट भी आने वाला है, अब करना क्या है बाजार में? Over the next few days, because the budget is on the annual, हम्म। मार्केट्स थोड़े से चॉपी ट्रेंड रहने वाला है। हम्म। रिकवरी भी आ सकती है। Now, ओके। how fast the recovery is above the 23,400 level is the हम्म। question. अगर हम 23,400 लेवल के ऊपर जाते हैं तो we can say that we are for the time being out of the woods. But we have to keep only one thing in mind, that the US markets are at their all-time highs, and राइट। ट्रम्प ने आके बहुत सारी कमेंट्री दी है कि we will bring uh, we will bring the war to an end. We will ask, Saudi Arabia to reduce the oil prices. America will start drilling and will reduce the oil prices. But ये सब ना, I think it is more to build a strong negotiating base against Russia. मुझे, nowhere has he said that he is going to lift the sanctions against Russia. So I think ट्रू। if you take all this into coordination, you will understand that he's trying to break the OPEC cartel between Russia and Middle East and ask them to lower the prices of oil. And at the same time, what he's trying to do on two fronts is get investments into the US, and with the help of Doji, cut the Fed spend, and somewhere improve the sentiment of the market to believe that we are in a path of reform, कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट काट रहे, फंड्स यूएस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर इफ दैट हैपेंस, ना व्हाट हैपेंस, दैट द फिजिकल डेफिसिट कैन बी मैनेज्ड विद द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू द यूएस। नाउ ओके। इफ ही इज एबल टू डू दैट, okay, and if he's able to attract capital with lower interest, with lower tax regime, तो आप देखोगे कि पूरा जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो it will go back to the mother market, not only FDI but also FPI. And Europe will become reliant on US, because for the US, keeping Europe and Russia segregated makes a lot of sense, because then you have Europe looking towards the US for manufacturing and oil supplies and etc etc. So ऐसा ये जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो बन रहे हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ सक्सेसफुल ही इज इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दैट ही सेज. So until that point, there is the possibility that market does a hope trade and we have a rebound. It is quite possible. ओके। But ओके। we have to keep one thing very much in mind, that we are at near the top in the US market, and if the US markets slice downwards, then and we break 23,000, then we could have a fresh bear market playing out in India. So the best strategy to play this is hedge yourself at 23,000 and then go long, depending upon what sectors will outperform in the budget.